Hello friends, in last lecture we have seen one of the important application of derivatives, maxima and minima theory. Now in this lecture we will see the next application, radius of curvature. First of all, let us see the meaning of curvature here. The measuring of the tightness of bends on the curve is called curvature. टाइटनेस ऑफ बेंड्स इन शॉर्ट टेढ़ापन, थोडक्यात वाकडेपणा म्हणल्यासारखं. सी हियर, सपोज these are few curves, number 1 2 3 4 5. Look at the first curve here which is having less curvature, म्हणजे थोडक्यात वाकडेपणा कमी, टेढ़ापन कम है इसमें. लुक एट द सेकंड स्ट्रक्चर हियर, थोडंसं कंपॅरेटिव्हली वाकडेपणा जास्त आहे, म्हणजे पहिल्या कर्वपेक्षा थोडंसं जास्त वाकडं आहे. राइट, पहले कर्व से थोड़ा सा टेढ़ापन ज्यादा है. फर्दर सी द थर्ड स्ट्रक्चर, कंपॅरेटिव्हली सेकंड अँड फर्स्ट कर्वेचर इज मोर, म्हणजे वाकडेपणा जास्त आहे, टेढ़ापन ज्यादा है. लुक एट द फोर्थ वन, वंस अगेन नंबर 3 से भी ज्यादा टेढ़ा कर्व है, म्हणजे यापेक्षा जास्त वाकडं हे चौथं कर्व आहे. लुक एट द फिफ्थ वन, इतना सही है, मतलब नंबर 4 से भी ज्यादा टेढ़ा यहाँ पे ये कर्व है. सो दिस इज कर्वेचर. कर्वेचर मीन्स इन शॉर्ट टेढ़ापन म्हटल्यासारखं, वाकडेपणा म्हटल्यासारखं. राइट, नाउ लेट अस सी द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कर्वेचर. सपोज दिस इज एनी कर्व and this line is tangent to this curve at this point, and suppose this angle is theta, then the rate of turning of the tangent theta with respect to the arc length s, the rate of turning मतलब ये tangent जो है ना, इसके turning का rate with respect to this arc length, arc length को notation है s. The rate of turning of the tangent theta with respect to the arc length s is called as curvature. Just like derivative of y with respect to x, we denote it as dy by dx, and in this case it is given by k is equal to d theta by ds. Curvature is denoted by a letter k. We read it as kappa. Okay, and presentation is like this: capital K is equal to d theta by ds. मित्रांनो, कर्वेचर हे कॅपिटल के ने डिनोट केलं जातं आणि वाचताना आपल्याला हे कॅपा इज इक्वल टू डी थिटा बाय डीएस असं वाचायचं असतं. द रेट ऑफ टर्निंग ऑफ द टँजेंट थिटा विथ रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ एस इज कॉल्ड एज कर्वेचर, अँड इट इज गिव्हन बाय कॅपा इज इक्वल टू, मीन्स कॅपिटल के स्टँड्स फॉर कॅपा, कॅपिटल के इज इक्वल टू डी थिटा बाय डीएस. नाउ लेट अस मूव टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर which is denoted by rho, and it is given by the reciprocal of curvature. So friends, radius of curvature is denoted by rho. We read it as rho. Okay, and the value of rho is equal to reciprocal of curvature. Curvature का reciprocal, it means 1 upon kappa. ये बात समझने के लिए हम लोगों को एक स्ट्रक्चर देखना होगा. दिस इज एनी कर्व, ये कौन सा भी एक कर्व है. Suppose we take 2 points on the same curve and check the tightness of the curve at these 2 points. Recently we have seen that curvature मतलब टेढ़ापन, isn't it? मित्रांनो, या दोन्ही पॉइंटला टाइटनेस जे आहे, कर्वचं जे वाकडेपण आहे ते डिफरंट आहे, वेगळं वेगळं आहे. यहाँ पे टेढ़ापन ज्यादा है और यहाँ पे टेढ़ापन कम है. ओके, नाउ लेट अस सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो क्या बात है ते काय प्रकारे जाणून घेऊया. To find radius of curvature, we construct such a circle on which the same point lies. मित्रांनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर काढण्यासाठी आपल्याला असा एक सर्कल ड्रॉ करावा लागेल की ज्या सर्कलवरचा हा एक पॉइंट असेल. रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम लोगों को एक ऐसा सर्कल ढूंढना होगा कि जिस सर्कल पे ये वाला पॉइंट आना चाहिए. सिमिलरली एट दिस पॉइंट इफ वी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल on which the same point lies, we can construct like this. मित्रांनो, या ठिकाणी जर आपल्याला एक सर्कल कन्स्ट्रक्ट करायचं असेल ज्यावरती ते पॉइंट असेल तर आपल्याला असं एक छोटंसं सर्कल मिळेल. आई रिपीट, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा सर्कल ड्रॉ करना होगा जिस सर्कल के आर्क पे ये वाला पॉइंट बिलोंग करता है.
Okay, so the radius of circle, it means it is the radius of such a circle that if we construct a circle on which this point lies. मित्रांनो, या सर्कलचं रेडियस म्हणजे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, इन दिस केस ऑल्सो this one is the radius of curvature. Okay, now on comparing we can conclude that less curvature less, टेढ़ापन कम, इसका मतलब है मोर आरसी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा. एंड लुक एट दिस, मोर कर्वेचर मीन्स कर्वेचर ज्यादा है, इट इंप्लाइज दैट लेस आरसी, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है. गेटिंग क्लियर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर. ओके, it means less curvature implies more radius of curvature and more curvature implies less radius of curvature. मित्रांनो, आपलं जे कर्व आहे ना, ते जितकं कमी वाकडं तितकं रेडियस ऑफ कर्वेचर जास्त, आणि आपलं कर्व जितकं जास्त वाकडं असेल तितकं रेडियस ऑफ कर्वेचर कमी. आई रिपीट, कर्वेचर जितना कम उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, एंड कर्वेचर जितना ज्यादा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम. गेटिंग क्लियर? सो रो इज इक्वल टू 1 upon kappa. Now let us see the mathematical expression for the radius of curvature, formula of the radius of curvature. Radius of curvature is given by this formula. Rho is equal to 1 plus y1 square bracket raised to 3 by 2 divided by y2. So friends, this one is the proved result of radius of curvature. In this case, y1 means dy by dx and here y2 is there. y2 का मतलब है d2y by dx square, मतलब डबल डेरिव्हेटिव्ह. आय रिपीट, मित्रांनो, हे प्रूव्ह केलेलं रूल आहे रेडियस ऑफ कर्वेचरचं. रेडियस ऑफ कर्वेचर या सूत्रांनी काढलं जातं. रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय y2. इन अनदर वर्ड्स, इट इज ऑल्सो बी गिवन एज लाइक दिस. रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का मतलब है dy by dx का स्क्वायर होल थिंग रेस टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय y2 मीन्स d2y by dx स्क्वायर. मित्रांनो, आपल्याला हे सूत्र आहे असं पाठ करायचं आहे आणि एग्जाम्पल सोडवत असताना वापरायचं आहे. हमें इन दोनों में से कोई भी एक रूल याद रखना होगा टू फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. I think we will remember this formula which is very easy to remember. हे फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करू जे यापेक्षा जरा दिसायला सोपं दिसतं. लुक हियर, 1 प्लस y1 स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू 3 by 2 डिवाइडेड बाय y2. y1 म्हणजे dy by dx, y2 म्हणजे d2y by dx स्क्वेअर. ओके, and while finding kappa, which is curvature, it is given by 1 upon rho. Recently we have seen that curvature and radius of curvature both are reciprocal of each other. So kappa is equal to 1 upon rho. Now before moving to the actual examples, let us see one concept here. Suppose this is a circle, this is y-axis, x-axis, this is origin. The equation of this circle is given by like this: x square plus y square is equal to radius ka square. So friends, if the equation is like this, x square plus y square is equal to r square, it represents a standard circle which is having center at origin and radius is equal to r. मित्रांनो, x square plus y square is equal to r square या पॅटर्न मध्ये जर इक्वेशन असेल, याचा अर्थ असा आहे की हे इक्वेशन एक स्टँडर्ड सर्कल रिप्रेझेंट करतं ज्याचं सेंटर ओरिजिनला आहे आणि रेडियस r आहे. फॉर एक्झाम्पल, सपोज द इक्वेशन इज लाइक दिस: x square plus y square is equal to 100. Now we can write the same equation in this pattern also like this: x square plus y square is equal to 100 can be written as 10 का square. बराबर. So this equation represents a circle which is having center at origin and radius is equal to 10. इसका जो रेडियस है ना वो होता है 10. Getting clear? Let's take one more sample here. Suppose the equation is like this: x square plus y square is equal to 49. We can rewrite the same equation as x square plus y square is equal to 49 means 7 का स्क्वायर है वो. बराबर. So comparing it with the standard form, x square plus y square is equal to r square,
इट इम्प्लाइज दैट ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स अ स्टैंडर्ड सर्कल विच इज हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस आर. यहाँ पे रेडियस इसका कितना होगा? आर इज इक्वल टू कितना होगा? 7 यूनिट्स. गेटिंग क्लियर? नाउ let us move to the examples. See the first question here. The radius of curvature of curve x square plus y square is equal to 25 at any point is. Recently we have seen that if the equation is like this, x square plus y square is equal to r square, then it is a standard circle with center at origin and radius is equal to r. Okay. Now look at the given question here. X square plus y square is equal to 25. 25 मतलब किसका स्क्वायर होगा? वो 5 स्क्वायर, isn't it? So it implies that इसका जो रेडियस है ना, रेडियस r is equal to क्या होगा? 5. मित्रांनो या सर्कलचे रेडियस किती असेल? 5 असेल. ओके. So 5 be the radius of this circle at any point. It is in option B. So option B is correct. Second question, the radius of curvature of the curve x square plus y square is equal to 16 at any point is. Parallel question is that x square plus y square is equal to 16. It means it is 4 square. Okay. It implies that its radius is equal to how much? It represents a circle with center at origin and radius is equal to r square. मतलब r radius होता है तो 4 square मतलब radius कितना हुआ? r is equal to 4. It is in option A. So option A is correct. Now let us move to the third question. The curvature of curve x square plus y square is equal to 9 at any point is. क्वेश्चन नंबर 3 में कर्वेचर पूछा है. कर्वेचर का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर मतलब कैपा and it is equal to 1 upon rho. Okay. So in this case, first of all, radius of curvature निकालते हैं. Radius of curvature rho is equal to x square plus y square is equal to 9 is there, isn't it? X square plus y square is equal to 9. 9 को हम लोग 3 square ऐसा लिख सकते हैं. मित्रांनो x square plus y square is equal to 9 असं इक्वेशन आहे. ज्याला आपण x square plus y square is equal to 3 square असं लिहू शकतो. इट इम्प्लाइज दॅट इसका जो रेडियस है ना वो होता है 3 युनिट्स. याचं जे रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे ते येतं 3. इट इम्प्लाइज दॅट रो इज इक्वल टू 3 युनिट्स. इट मीन्स कॅपा इज इक्वल इन दिस केस 1 अपॉन 3. ओके. कर्वेचर का फॉर्मूला ये है 1 अपॉन रो. सो इन दिस केस कर्वेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 and it is in option C. So option C is correct. See the fourth question here. The radius of curvature of curve y is equal to x cube at 1 1 is. First of all, let us write the formula for radius of curvature. Rho is equal to, it is 1 plus y1 square bracket raised to 3 by 2 divided by y2. Okay. So now we are going to find y1 and y2 at point 1 comma 1. 1 1 मतलब x ची किंमत 1 आणि y ची किंमत 1. Okay. So y1 मतलब what? dy by dx and y2 means what? Double derivative d2y by dx square. In this case y is equal to x cube is there. Y is equal to x cube is the given equation. सो y1 का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव वो होता है 3x स्क्वायर. वन सेकेंड, डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का एक और बार डेरिवेटिव. 3x स्क्वेअरचं पुन्हा एकदा डेरिवेटिव काढलं की डबल डेरिवेटिव मिळतं. एक्स स्क्वेअरचं डेरिवेटिव असतं 2x, तो 3 इंटू 2x होगा 6x. आई रिपीट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज द गिवन इक्वेशन. dy बाई डी एक्स निकालिए, सिंगल डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है. वन सेकेंड डबल डेरिवेटिव निकालिए, 3x स्क्वायर का एक और बार डेरिवेटिव, x स्क्वायर का 2x होता है, तो 3 इंटू 2x मतलब 6x. ये हुआ डबल डेरिवेटिव. नाउ द पॉइंट इज गिवन एट 1 1. एट 1 1 मतलब x1 और y भी 1. सो इन दिस केस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुटअप करने के बाद 3x स्क्वायर गिव्स यू 3 इंटू 1 स्क्वायर मतलब 3. So this is dy by dx y1 and in the double derivative also at 1 1 मतलब x और y की कीमत 1 पुटअप करना होगा. It comes 6 into 1 मतलब 6. Okay, so d2y by dx square comes 6. Now putting these two values in the formula of radius of curvature, rho is equal to so and so. Okay, so therefore rho becomes
1 plus y1 square means सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, होल थिंग रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय y2, y2 मतलब डबल डेरिवेटिव 6. ओके, सो 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 1 हुआ 10, ये हुआ 10 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज द आंसर. 10 raised to 3/2 divided by 6 is the answer, and it is in option A. So option A is correct. Now let us see question number 5 here. Radius of curvature of curve y is equal to x cube. Again the parallel question is there, y is equal to x cube. Question same है, but the point is different. At 2,8 point वेगळे दिला है, ठीक है कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर ऐसा ही आएगा. रो इज इक्वल टू 1 प्लस वाई वन स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 अपॉन y2, ये हुआ उसका फॉर्मूला. y1 और y2 निकालते हैं. y1 म्हणजे डीवाय बाय dx, y2 म्हणजे डबल डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का पहला डेरिवेटिव, ये दूसरा डेरिवेटिव. एट 1 की जगह एट 2,8 दिया है, मतलब x की जगह 2 एंड y की जगह 8 रखना होगा. x की जगह 2, y की जगह 8 रखना होगा. ओके, सो इन दिस एक्सप्रेशन पुटिंग x इज इक्वल टू 2 हियर, x की जगह अगर 2 रिप्लेस किया तो यहाँ पे होगा 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पे आएगा 12. ओके, इंस्टेड ऑफ 3 यहाँ पे 12 आएगा. नाउ इन दिस डबल डेरिवेटिव इंस्टेड ऑफ 1 1 वी पुट 2,8 मीन्स x की जगह 2 पुट अप करते हैं. इट कम्स 6 इंटू 2 एंड 6 इंटू 2 मतलब 12. सो यहाँ पे 12 आएगा. ओके मित्रांनो, रिसेंटली आपण सेम क्वेश्चन पाहिलो होतो, फक्त या ठिकाणी 1 1 असं होतं. सिंगल डेरिव्हेटिव्ह काढा, डबल डेरिव्हेटिव्ह काढा, यामध्ये 2,8 असं पुटअप करायचं आहे. याचा अर्थ x दिसलं की 2 ठेवा, y दिसलं की 8 ठेवा. ओके, इन दिस केस y इज अबसेंट, सोडून द्या. x तर दिसताना दिसतं, x च्या ठिकाणी किती ठेवायचं आहे? 2 ठेवायचं आहे. ठेवलं, 2 चा वर्ग 2 स्क्वेअर बिकम्स 4, 4 इंटू 3 म्हणजे 12. आता डबल डेरिवेटिव यामध्ये 2,8, याचा अर्थ x दिसलं की 2, y दिसलं की 8. यहाँ पे y नहीं दिखता, छोड़ दो. x की जगह कितना पुटअप करना है? 2. 6 इंटू 2 मतलब 12. सो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 12. ओके, नाउ पुटिंग दीज टू वैल्यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ रो इज इक्वल टू सो एंड सो. ओके, सो 1 प्लस y1 स्क्वायर, y1 मतलब 12, यहाँ पे आएगा 12 का स्क्वायर, 1 प्लस 12 का स्क्वायर, होल थिंग रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय y2 मतलब यहाँ पे कितना आया है? 12. y2 मतलब यहाँ पे कितना है? 12. ओके, नाउ 12 स्क्वायर मतलब कितना हुआ? 144. 12 चा वर्ग 144 येतं. 144 प्लस 1 मतलब यहाँ पे आएगा 145. ओके, सो इट विल बी 145 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 12 बी द आंसर. So 145 raised to 3/2 divided by 12, it is in option C. So option C is correct. Now let us see question number 6 here. The radius of curvature of curve root x plus root y is equal to 1 at 1/4 where dy by dx is equal to -1 and double derivative is equal to 4 is, in this case we write the formula for rho is equal to 1 plus y1 square bracket raised to 3/2 divided by y2. y1 is equal to -1 is given and y2 is equal to means double derivative 4 is given. ओके मित्रांनो, या एक्झाम्पल मध्ये y1 आणि y2 दोन्हीही किमती दिलेल्या आहेत, त्यामुळं आपण फक्त या ठिकाणी व्हॅल्यूज पुटअप करू. यहाँ पे सिर्फ व्हॅल्यूज पुटअप करते हैं. रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, होल थिंग रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय y2 का मतलब है d2y by dx स्क्वायर, इट इज गिवन एज 4. नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1 प्लस 1 मतलब 2 रेज टू 3/2, 2 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 4. ओके, नाउ वी ऑल नो दैट laws of indices says that 2 raised to 3/2 can be written as 2 raised to 1 into 2 raised to half, isn't it? With the help of x raised to m plus n is equal to x raised to m into x raised to n. Getting clear? In this case 2 raised to 1 into 2 raised to half is equal to
2 raised to half plus 1 and half plus 1 means 3 by 2. I repeat 2 raised to 3 by 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 raised to 1 into 2 raised to 1 by 2. Okay. Now divided by 4, keep it as it is 4. Now 2 raised to 1 means 2 and it comes 2 1 the 2, 2 2 the 4. यहाँ पे डिवाइडेशन होता है लाइक दिस. इट इज इक्वल टू 2 रेस टू हाफ का मतलब होता है रूट 2. ओके, विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस वी नो दैट रूट एक्स का मतलब है एक्स रेस टू हाफ. ओके, सो एक्स रेस टू हाफ याचा अर्थ मित्रांनो रूट एक्स असतं. या केसमध्ये 2 रेस टू हाफ म्हणजे रूट 2 अँड डिवायडेड बाय दिस 2 कॅन बी रिटन ॲज रूट 2 इंटू रूट 2. हे जे डिनोमिनेटरचं 2 आहे ना, डिनोमिनेटर वाला 2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2. नाउ वी कैन कैंसल रूट 2 फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फायनल आन्सर विल बी 1 अपॉन रूट 2. फायनल आन्सर हे 1 अपॉन रूट 2 असं येतं. सो 1 अपॉन रूट 2 बी द आन्सर. इट इज इन ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. So friends, in this case we have written 2 raised to 3 by 2 as 2 raised to 1 into 2 raised to half, जे आपण यापूर्वी कधी लिहिलेलं नव्हतं. बरोबर आहे मित्रांनो. लॉज ऑफ इंडायसिस काय सांगतं, x raised to m plus n is equal to x raised to m into x raised to n. With the help of this formula we can write x raised to 1 into x raised to half can be written as x to the power 1 plus half. Okay, and 1 plus half means 3 by 2. Getting clear? So x raised to 3 by 2 can be written as x raised to 1 into x raised to half. So with the help of this result we have written 2 raised to 3 by 2 as 2 raised to 1 into 2 raised to half. हम लोगों ने इस फॉर्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल किया है. ओके, फर्दर हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है. x raised to half का मतलब होता है रूट एक्स. इन दिस केस 2 रेस टू हाफ का मतलब है रूट 2. ओके, एंड यहाँ पे डिवाइडेशन होने के बाद डिनोमिनेटर में जो 2 बचता है उसे हम लोगों ने रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसा लिखा है. बिकॉज रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होता है x, बराबर. इन दिस सेम वे इस 2 को हम लोगों ने रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसा लिखा है. एक रूट 2 वरून खालून कॅन्सल होतं आणि 1 अपॉन रूट 2 असं उत्तर येतं. ओके, 7th क्वेश्चन. The radius of curvature of a bending beam y is equal to 2 sin x minus sin 2x at x is equal to pi by 2 is y is equal to 2 sin x minus sin 2x is the expression. First we find single derivative y1. It is equal to 2, keep it as it is. Derivative of sin x is cos x minus as it is. Derivative of sin 2x is cos 2x into 2. Okay, now at x is equal to pi by 2, at x is equal to pi by 2, pi by 2 means 90 degree. Okay, pi by 2 याचा अर्थ काय 90 degree. y1 becomes 2 as it is. Cos 90 degree, we know the value of cos 90 degree is 0. cos 90 0 असतं मित्रांनो. माइनस एज इट इज, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 बाहर का इंटू 2 उसे वैसा ही रखते हैं 2 इंटू. लुक एट दिस वन. इफ यू पुट हियर x इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 90 डिग्री, यहाँ पे है 2x मतलब 2 इंटू 90 डिग्री. 2 इंटू 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री. एंड वी नो द व्हॅल्यू ऑफ cos 180 डिग्री ॲज -1. मित्रांनो cos 2x आहे ना, इथं एक्सच्या ठिकाणी आपल्याला 90 डिग्री ठेवायचा आहे. तर 2 इंटू 90 डिग्री म्हणजे किती होणार 180 डिग्री. आणि कॅल्सीवर आपण चेक करा, cos 180 डिग्री किती असतं -1 असतं. सो इन दिस वे y1 is equal to, this is 0, minus and minus becomes positive 2 be the value of y1. Now let us find y2 means double derivative. y1 का एक और बार डेरिवेटिव निकालने के बाद y2 मिलेगा. यहां पे y1 का स्टेप है. वी विल फाइंड वन मोर डेरिवेटिव ऑफ y1. वी गेट हियर y2 इज इक्वल टू, y1 म्हणजे सिंगल डेरिवेटिव, y2 म्हणजे डबल डेरिवेटिव. 2 cos x का डेरिवेटिव, 2 को धक्का नहीं लगाते. cos x का डेरिवेटिव आता है
मायनस साइन एक्स. मित्रांनो कॉस एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह असतं मायनस साइन एक्स. बीच वाला माइनस एज इट इज, ये वाला 2 एज इट इज. कॉस 2x का डेरिवेटिव, कॉस 2x का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन 2x इंटू 2. मित्रांनो कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन असतं, कॉस 2x का डेरिव्हेटिव्ह होता है मायनस साइन 2x इंटू 2. दिस मायनस मायनस बिकम्स पॉझिटिव्ह. हे मायनस आणि इथला मायनस मिळून प्लस होत आहे. ओके, नाव at x is equal to pi by 2 again. So at x is equal to pi by 2, y2 is equal to minus 2 into sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1. Further, plus as it is, 2 into 2 means 4 into, look at this one. If we put here x is equal to 90 degree, it comes 2 into 90 degree means 180 degree, and the value of sin 180 degree is 0. मित्रांनो sin 180 0 असतं. Or if we put here x is equal to pi by 2, 2 get cancel. Sin pi, the value of sin pi is 0. Now, finally, value of y2 becomes minus 2 into 1 means minus 2. Now we write the formula for radius of curvature. Now putting the values, it is equal to 1 plus y1 square means y1 means 2. 2 square, whole thing raised to 3 by 2 divided by y2 means minus 2. Okay. Now 2 square means 4, 4 plus 1 is 5, 5 raised to 3 by 2 divided by minus 2 be the answer. Or it can also be written as 5 raised to 3 by 2 means 5 into 5 raised to half, and 5 raised to half means root 5. Recently we have seen that x raised to 3 by 2 can be written as x into x raised to half. So it is 5 into root 5 divided by minus 2. Okay, the answer will be 5 raised to 3 by 2 upon minus 2 or 5 root 5 upon minus 2. Okay, so 5 root 5 upon minus 2, it is in option A. So option A is correct. Now let us move to the next sum. A telegraph wire hangs in the form of a curve y is equal to a log sec of x by a, where a is constant. The curvature of this curve at any point is, question is the curvature of curve at any point. First we find the radius of curvature with usual formula, and then we find curvature, which is given by kappa is equal to 1 upon rho. We know that rho is equal to 1 plus y1 square bracket raised to 3 by 2 divided by y2. In this case, the value of y is given as y is equal to a into log of sec of x by a. ठीक है, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव निकालते हैं. सिंगल डेरिवेटिव y1 इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर है, वैसा ही रखिए, इनटू log of sec x by a is looking like log star, जिसका डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन स्टार इंटू स्टार डैश. ओके, लॉग स्टार का डेरिवेटिव लिखते हैं 1 अपॉन स्टार, स्टार मतलब इन दिस केस सेक एक्स बाय ए, इंटू स्टार डैश का मतलब है सेक एक्स बाय ए का डेरिवेटिव, विच इज अगेन लुकिंग लाइक सेक स्टार. इट्स डेरिवेटिव इज गिवन बाय सेक स्टार tan स्टार इंटू स्टार डैश. यहां पे sec ऑफ x बाय ए इज लुकिंग लाइक sec स्टार, जिसका डेरिवेटिव हम लोगों को यहां पे ऊपर लिखना है, sec स्टार tan स्टार इंटू स्टार डॅश. या केसमध्ये स्टार म्हणजे कोण, x बाय ए. इन दिस केस स्टार मतलब है x बाय ए, यहां पे भी x बाय ए इंटू स्टार डॅश मतलब x बाय ए का डेरिवेटिव. या ठिकाणी आपल्याला स्टार डॅश लिहायचं आहे, याचा अर्थ कुणाचं डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं आहे, एक्स बाय एचं डेरिव्हेटिव्ह लिहायचं आहे. अँड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स बाय ए इज गिव्हन बाय 1 बाय ए. एक्स बाय एचं डेरिव्हेटिव्ह असतं मित्रांनो 1 बाय ए, बिकॉज एक्स बाय ए यामध्ये बाय ए इज अ कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिव्हेटिव्ह होता है 1. आई रिपीट, इन द टर्म एक्स बाय ए इज अ कॉन्स्टेंट, the derivative of x gives you 1. So the derivative of x by a is 1 by a. Okay. Now look at this term carefully. A and 1 by a will get removed.
Further, sec x by a, and in this case also denominator sec x by a get cancelled. Finally, y1 comes tan x by a. ओके, y1 ची किंमत आपल्याला tan x by a असं मिळतं. Now we find double derivative. It implies that double derivative y2 is equal to one more times derivative tan x by a का डेरिव्हेटिव्ह. इट इज लुकिंग लाईक tan स्टार. tan x चं डेरिव्हेटिव्ह असतं मित्रांनो sec स्क्वेअर x. तर tan स्टारचं डेरिव्हेटिव्ह असतं sec स्क्वेअर स्टार इंटू स्टार डॅश. tan स्टार का डेरिवेटिव sec स्क्वायर स्टार मतलब x बाय ए इंटू स्टार डैश मतलब x बाय ए का डेरिवेटिव. अभी अभी देखा है x बाय ए का डेरिवेटिव होता है 1 बाय ए. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y2. Now putting these two values in the expression rho is equal to 1 plus y1 square bracket raised to 3 by 2 upon y2. Rho becomes 1 plus y1 square. y1 square means tan x by a का square. It comes tan square x by a. Whole thing raised to 3 by 2 divided by y2. y2 मतलब sec square x by a into 1 by a. It will be 1 by a into sec square x by a. Now with the help of trigonometry, we know that 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. We are going to use this rule in this expression. Rho is equal to, in the numerator 1 plus tan square theta is there. 1 plus tan square theta का मतलब है sec square theta. थीटा मतलब यहाँ पे x by a है. Whole thing raised to 3 by 2 divided by 1 by a into sec square of x by a. Further, यहाँ पे square and raised to 3 by 2, इसमें square का जो 2 है वो 2 and 3 by 2 का by 2 कैंसिल होता है. Because we know that x raised to m bracket raised to n is given by x raised to mn. मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो sec स्क्वायर एंड रेस्ट टू 3 बाई 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा. स्क्वायर का 2 एंड यहाँ पे बाई 2 का 2 कैंसिल होता है. न्यूमरेटर में बचेगा sec क्यूब, डिनोमिनेटर में है sec स्क्वायर. ओके, sec क्यूब डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर. इसमें sec स्क्वायर कैंसिल होगा एंड sec क्यूब में से sec स्क्वायर कैंसिल होगा और sec x बाय a न्यूमरेटर में बचेगा. It is just looking like x cube upon x square. Okay, it will be x बराबर. तो sec क्यूब डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर का मतलब स्क्वायर क्यूब में से 2 कैंसिल, sec x बाय a शिल्लक. ओके, नाउ रो इज इक्वल टू sec x बाय a डिवाइडेड बाय 1 बाय a. ओके, ये जो 1 बाय a है ना, 1 by a denominator goes on, so numerator it comes rho is equal to a into sec of x by a. So friends, this is radius of curvature, but the question is the curvature of this curve at any point. Curvature means kappa, and kappa is equal to 1 upon rho. It is equal to 1 upon rho means a into sec of x by a. Okay, now the last step, kappa curvature is equal to 1 by a, keep it as it is. 1 upon sec मतलब cos, 1 upon sec of x by a, it means cos of x by a. So finally kappa is equal to 1 upon a into cos of x by a, be the answer. 1 upon a cos of x by a, it is in option D. Curvature 1 upon a cos of x by a, it is in option D. So option D is correct. Now the next question, the radius of curvature of curve y is equal to log of sin x at x is equal to pi by 2 is y is equal to log of sin x is the equation. First we find single derivative, y1 is equal to, it is looking like log star, derivative is given by 1 upon star into star dash. It is 1 upon sin x into star dash means sin x का derivative cos x. So cos x upon sin x means it is cot x. y1 is equal to cot x. Now at x is equal to pi by 2, our y1 becomes cos pi by 2 is 0.
Sin pi by 2 is 1. 0 upon 1 is 0. y1 is equal to 0. मित्रांनो cos pi by 2 ची किंमत 0 असतं. sin pi by 2 ची किंमत 1 असतं. 0 upon 1 म्हणजे y1 ची किंमत 0 आली. Now we find y2 is equal to y1 is equal to cot x. We find one more derivative. आणखीन एकदा डेरिवेटिव काढा. एक और बार डेरिवेटिव निकालिए. y2 becomes cot x का डेरिवेटिव है minus cos x square x. Now again at x is equal to pi by 2. Okay. y2 becomes minus, keep it as it is, cosec square pi by 2. We know that cosec is a reciprocal of sine and sin pi by 2 is equal to 1. Sin pi by 2 is equal to 1. Sin 91 असतं. It implies that cosec pi by 2 is also reciprocal of 1 means 1 च्या उलट 1 upon 1 means 1. Okay. So cosec pi by 2 is equal to 1. So finally y2 becomes negative cosec square of pi by 2. It means minus 1. Cosec pi by 2 ची किंमत 1 येते. 1 चा स्क्वेअर केलं तर 1च राहतं. मायनस बाहेर आहे ते keep it as it is. y2 is equal to minus 1. Now we know that rho is equal to 1 plus y1 square bracket raised to 3 by 2 divided by y2 is the formula of radius of curvature. It is equal to 1 plus y1 square means 0 का square 0 raised to 3 by 2 divided by y2 means minus 1. Okay. So the final answer will be 1 raised to 3 by 2 means 1. 1 upon minus 1 means minus 1. मित्रांनो 1 raised to काही का असेल 1च असतं. 1 upon minus 1 म्हणजे minus 1 be the answer. It is in option B. So option B is correct. Now 10th question. The radius of curvature of curve y is equal to e raised to x at 0, 1 is y is equal to e raised to x is the question. y1 means single derivative. It is e raised to x. y2 means double derivative. आणखीन एकदा डेरिवेटिव काढलं. Again it comes e raised to x. Now at 0, 1 y1 becomes, यहाँ पे x की जगह 0 रखना होगा. What is e raised to 0? e raised to 0 is equal to 1. And y2 is equal to, once again we put x is equal to 0 here. It comes again e raised to 0. It is 1. We know that anything raised to 0 is equal to 1. So y1 is equal to 1 and y2 also 1. Now we put these two values in the expression of rho is equal to 1 plus y1 square bracket raised to 3 by 2 divided by y2, which is the expression of radius of curvature. Putting the values here, it is equal to 1 plus y1 square means 1 ka square. It comes 1 raised to 3 by 2 divided by y2 means again 1. Okay. So answer will be 1 plus 1 means 2 raised to 3 by 2. Rho is equal to 2 raised to 3 by 2. Or it can be written as recently we have seen that it is 2 root 2. Okay. So 2 raised to 3 by 2 किंवा 2 root 2 यापैकी कोणतेही उत्तर चालतं. So 2 root 2 it is in option C. So option C is correct. Now question number 11. The radius of curvature of curve x square plus y square is equal to a square at any point is, already we have seen this equation, x square plus y square is equal to r square, which is a standard circle having center at origin and radius is equal to r. In this case, the radius of this circle is given by a, which is a constant. A means constant number. Okay. सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस ये कॉन्स्टंट होता है. कॉन्स्टंट मतलब नंबर. ओके मित्रांनो, कोणत्याही सर्कलचं जे रेडियस असतं ना ते रेडियस हे नेहमी कॉन्स्टंट असतं. व्हेरिएबल नॉट डिफाईन्ड वगैरे काय नसतं. ओके. सर्कलचं रेडियस हे नेहमी कॉन्स्टंटच असतं. ओके. Now let's see the last question here. The radius of curvature is equal to curvature, reciprocal of curvature, negative of curvature, none. In the basics we have seen that the radius of curvature is a reciprocal of curvature. Okay. Kappa is equal to 1 upon rho, isn't it? So option B is correct. So friends, in this way we have seen all the probable questions based on the radius of curvature. You can solve such kind of parallel examples also. Okay. Thank you.